Very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies. Today we are going to start our chapter 14, which is houses then and now. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे जो हाउसेस होते हैं वो प्रीवियस अर्लियर टाइम्स में कैसे थे और आज के टाइम पर कैसे हैं. सो वी विल कंपेयर द हाउसेस इन द प्रीवियस टाइम्स एंड इन द टुडेज वर्ल्ड. सो without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of a chapter is Houses then and now, and the topics which we will discuss are houses in rural areas, houses in urban areas, some other special kinds of houses. So in older times, जो people थे, they built very small and simple houses with a lot of green space in and around them. The houses, they 1 or 2 stories with very high roofs. Each house had one bathroom which was shared by the entire family. Oil lanterns were used to light the houses. Food was cooked on chulas. Coal, wood, or dried cow dung was used as in chulas as fuel. People lived in joint families, helped each other in all the chores. Houses in rural areas कैसे हैं? जो different types of houses built हो रहे हैं हमारी country के अंदर, वो depend करते हैं as per the climate, building material available locally, and the amount of time and money available for the construction. जो houses है rural areas में वो quite different होते हैं from the houses built in urban areas. First, it is your activity which says how many people are involved in building a hut. किसी भी hut को बनाने के लिए कितने people involve होंगे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं many. Second question है, is it safe to live in kacha house? So no, it is not safe to live in kacha house. Now, moving forward, huts or kacha house are the most common type of houses built in villages. They are made of mud, straw, dried leaves, bamboo, etc. तो जो कच्चा हाउस है वो विलेजेस में बनाए जाते हैं और इन सब चीजों की मदद से. They have mud and brick walls with thatched roofs. जो हट होती है या फिर जो कच्चा हाउस होता है is not a strong and durable house. It can get blown away in storms and heavy rains. Heavy rains या फिर बड़ी बड़ी अगर heavy storms आ जाती हैं तो ये जो हाउस है ये ड्यूरेबल नहीं है, ये ब्लो आउट हो जाएगा. ये रिक्वायर करता है रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस. इट इज टेम्पररी हाउस. However, life in village is changing now. जो people हैं, they have started using same construction materials as used in cities ताकि वो एक strong पक्का house build कर सके. Houses in urban areas, तो houses जो है वो stronger हैं, well planned हैं, more durable हैं than the houses in rural areas. They are made of baked bricks, cement, steel, iron rod, tiles, granite, wood and marble. जो floor होता है वो material से बनता है जैसे floor tiles या फिर marbles. Walls are made of bricks and plastered with a mixture of sand and cement. They do not require regular repair and maintenance. जो पक्का house होता है उसके अंदर बहुत सारे rooms होते हैं जैसे drawing room, dining room, kitchen, bathroom, bedroom. They are permanent structures called पक्का house. Various kinds of houses built होते हैं, accommodate करते हैं growing population को. जैसे आता है flats in multi-story building. Flats जो होते हैं वो multi-story बिल्डिंग में होते हैं जैसे फ्लैट या फिर अपार्टमेंट जो है वो सिमिलर टाइप के हाउसेज होते हैं बिल्ड साइड बाय साइड इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनीज. यानी कि दे आर बिल्ट लाइक दिस टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ स्पेस इन बिग सिटीज. दे आर मोस्टली बिल्ट इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स which may be as tall as 50 to 20 floors. Such tall buildings which seem to touch the sky are called skyscrapers. जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज होती हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं विद देयर ओन क्लब्स, मार्केट, स्विमिंग पूल, लॉन एटसेट्रा. जो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सिक्योरिटी और पार्किंग इश्यूज होते हैं दे आर ऑल्सो वेल टेकन केयर ऑफ द बाय द सोसाइटी अथॉरिटीज. फिर हमारे पास आते हैं बंगलोज. तो बंगलोज जो है वो अर्बन एरियाज में फाउंड होते हैं. दे आर बिग हाउस विद गार्डन एंड लॉन्स. दे मे बी 1 or 2 story high. They are made of baked bricks, stones, marbles, iron, mortar, cement, wood, and glass. They have rooms like drawing room, dining room, kitchen, bedroom, bathroom, garage, and servant quarters, etc. Now, some other special kinds of houses. These are houses which are built due to the special location are called special houses. Special location की वजह से जो houses build होते हैं उनको हम special houses बोलते हैं जैसे stilt house. तो stilt house जो है वो कुछ ग्राउंड से ऊपर लेवल पे बनाया जाता है जैसे हाउसेज आर फाउंड इन प्लेन्स दैट रिसीव हैवी रेनफॉल. तो दे आर बिल्ट ऑन रेज्ड वुड पोल्स और स्टिल्स जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो. सच शेल्टर प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम स्नेक्स, इंसेक्ट, वाइल्ड एनिमल्स, रेन्स एंड फ्लड्स. ये हेल्प करते हैं स्लोपिंग रूफ सो दैट द रेन वाटर है वो स्लाइड अवे हो जाए इजीली.
नेक्स्ट इज इग्लूज। तो इग्लू क्या है? एक डोम शेप का हाउस होता है जो ब्लॉक ऑफ आइस से मिलके बनता है। दे आर बिल्ट एट द पोल्स सच एज इन ग्रीनलैंड। पीपल लिविंग इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्किमोस। नेक्स्ट इज व्हील कारवांस या फिर ट्रेलर्स। जो व्हील कारवा या फिर ट्रेलर होता है ये मोबाइल हाउस होता है। इट हैज व्हील्स एंड इज यूजुअली towed by a car. Some caravans are pulled by animals too. Do you know हाउस बोट्स जो होती है वो फाउंड होती है इन डाल लेक इन कश्मीर एंड इन ब्लैक वाटर्स ऑफ केरला। दे आर यूज्ड बाय टूरिस्ट। फिर आती है हमारे पास हाउस बोट। तो हाउस बोट क्या होती है? ये फ्लोटिंग हाउस होते हैं इन वाटर और द शेल्टर मेड ऑन अ बोट। हाउस बोट्स यूजुअली हैव वेल फर्निश्ड लग्जूरियस रूम्स। It is your activity which says identify the type of house given below and write their names. So we can write here. First में हमें क्या दिख रहा है? It is a tent house. Then the another was a stilt house. Then bungalow. Then it is a kacha house. It is your grocery where space means a place or an area that is empty or not used. Climate means the normal weather conditions of a particular region. Construction means the act or method of building or making something. Let's review the chapter. The Pakka house had one or two stories with very high roofs. Huts are made of mud, straw, dried leaves, bamboo, etc. The floor of Pakka house are made of materials like floor tiles and marbles. Let's do the exercise. First is tick the correct option. Kacha house are made of dash, dried leaves, etc. Mud. Old times, food was cooked on chulhas. Dash is a floating house on water. Houseboat. Dash houses are built at some level above the ground. Stilt. Dash is a mobile house. Wheel carva. Now fill in the blanks. Coal, wood and dried cow dung was used in chulhas as fuel. Hut is a temporary house. Dash are found in urban areas, bungalows. A houseboat is a floating house. Some caravans are pulled by animals. Next is true false. An igloo is made up of mud, false. Wheel caravan is a mobile house. True. Bungalow is a floating house on water. False. Stilt house are built at some level above the ground. True. Kacha house have many rooms. False. So students, this was a chapter about the houses in the previous times and in today's world. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.